Good evening, everyone. Welcome to MBA Karo. So, a lot of you have been eagerly waiting for this session. A couple of days back, I conducted a session on how to attempt MICAT, the strategy of going about in each of the sections. ठीक है, तो quant में क्या क्या किस तरह से attempt करना है, कितना time देना चाहिए, and I had requested you to ask if you wanted a GK session. So मैं हर साल लेता हूँ कोई भी एग्जाम होता है because I believe कि you can find content for other subjects, but you will not find relevant content for GK. Even last year, one of our logos was asked in MICAT. So, MICAT has small margins. तो एक number से भी काफी फर्क पड़ सकता है. And today we are going to have a session. We will be covering some logos, right, and current affairs, which I feel that are relevant for MICAT and even for the upcoming MBA exams like ZAT and CMAT, etc. Okay, so although we will have separate sessions for them as well. So good evening, everyone. I hope you are all set for the examination and must have taken the printout of your admit card and all. Okay, so we will begin this session. So please do like this video, and if you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel and join our community. So we had mocks for MICAT, which are as per the last year's paper, right? So what appeared in MICAT, and a lot of you also mentioned that these are the closest because no other institute provides that relevancy in terms of the kind of questions. So if you want to check how MICAT was last year, like this year, maybe there might be some changes, and if there are any changes, we will update the mocks for MICAT 2. ठीक है, तो अगर जो लोग माइकैट 1 भी दे रहे हैं और अपने माइकैट 2 भी दे रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर देम, राइट? सो वी विल बी अपडेटिंग द मॉक्स इफ देर आर एनी चेंजेस आफ्टर माइकैट 1. तो लास्ट ईयर भी हमने मॉक्स अपडेट किए थे बिकॉज कुछ फिल इन दो जो मैच द फॉलोइंग ईडीएम्स वाले आते वो पहली बार आए थे, सो वी चेंज द मॉक्स, राइट? सो वी विल बी changing the mocks also if there are any changes in MICAT 1, right? So जिसने नहीं दिया तो they can try it out and see the kind of questions that were asked last time. And we are providing descriptive writing tasks, so we will do the same for MICAT 2 as well. So in case you are preparing for that, so follow our channel for the same. Okay, so this is how the match the following question comes in MICAT. ये हमारे mock का question है, ठीक है? Now the thing is they give you 4 logos and 4 brands, right? So I know that many of you would already be knowing the answers. Please do comment it. ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा आएगा, since like it takes a lot of effort to generate all these 4 images, उसको table में लगाना and all those, right? So what I've done is I've just taken some logos and I'll tell कि what all logos to read for. Like देखो जीके में क्या होता है कि एक चीज जो पढ़ रहे हो उससे related चीजें भी बोलो. देखो, like let's say we will be taking up some logos and I want you to research other similar logos. ठीक है, so वो आप देख लोगे तो कुछ कुछ हो सकता है आपको help मिल जाए एग्जाम में, right? Okay, so anyone the answers to these 4, what A, B, C, D, what is the matching? Should be easy one. Okay, first A is Chanel. Yes, that is correct. Okay, and this is Lacoste. D is 1. And then what? This is Coach, right? C is 2 and B is 3. Okay, 4, 3. Okay, you were watching last year's. Yeah, was that last year's also? हो सकता है कुछ उसमें से भी आ जाए. Last year, I think sale or some PSU logo was asked, and the same logo we had discussed, right? Okay, so this is how the examination will test you, but we are going to take some logos. I will be presenting certain logos. I want you to answer them, right? And there will be some general awareness questions also, so please evaluate yourself. So logos में मुझे comment करके बताना end में how many logos were you able to identify correctly. Okay, so shall we begin? And please do appreciate our efforts by liking this video. So let's begin. Okay, so let's see how many of you know this logo. Okay, Hublot, Hermes, Dolce and Gabbana, Fendi.
So you need see there are a lot of talks about MICAT cutoff percentile. See, they not do not explicitly mention, but if you are somewhere less than 80, then definitely not possible. Around 85 is considered as a decent cutoff, right? Although some people in the early 80s also make it. Like कुछ ऐसे भी होते हैं जो 80 82 83 में भी clear कर लेते हैं, but there other things are very good, like वो GDPI and MyCat में काफी अच्छा perform करते हैं, descriptive writing काफी अच्छी होती है, but yes, like then you have to be exceptional in other things, ठीक है, and to be on the safe side, if you have 90 plus percentile, then you have good chances of converting. Okay, yes, the right answer is Hermes. So uh, Bubbly, Ayushi, Sneha, uh, fave sitcoms, etc. who all answered it correctly. That's good. So count one on your score. ठीक है, एंड लास्ट में बताना कि आप कितने लोगों सही गैस कर पाए आउट ऑफ आई थिंक आई हैव 10 लोगोस एंड दिस वन. ओके, आइडेंटिफाई दिस कंपनी. अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी पे अभी वीडियो बनाया था रिसेंटली, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन अवर चैनल. अ कपल ऑफ डेज बैक आई created a video. The title might be like the most difficult NV entrance examination, so that people who have not appeared on MyCat really know that it is the most difficult one. Okay, so watch that video. Okay, which company is this? Now, it's the tricky one. Many of you might answer wrong in this question. क्योंकि बहुत फाइन मार्जिन है ये लोगो में. देर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट हैव विंग्स एज द लोगो. ओके, बेंटले, एस्टन मार्टिन. देखो, बेंटले में बी बना होता है, एस्टन मार्टिन में भी कुछ लिखा रहता है. देयर इज सम टेक्स्ट इन एस्टन मार्टिन आल्सो. आई न्यू दैट मोस्ट ऑफ यू वुड से एस्टन मार्टिन इन दिस, राइट? एस्टन मार्टिन नहीं है, ठीक है, एस्टन मार्टिन नहीं है. एस्टन मार्टिन का लोगो चेक कर लेना, ठीक है. मुझे पता था एस्टन मार्टिन का ही लोगो लोग बोलेंगे, ठीक है, बट एस्टन मार्टिन नहीं है. देयर इज एस्टन मार्टिन रिटन इन दिस, ठीक है. बेंटले में बी लिखा रहता है, इसमें एस्टन मार्टिन लिखा रहता है टेक्स्ट. तो इंटरेस्टिंग, नन ऑफ यू गॉट इट राइट. इट इज लॉन्जाइन्स. ठीक है, लॉन्जाइन्स इज लाइक लग्जरी वॉच maker. Okay, so that is the answer. Bentley के उसमें भी see all these have, I think this also has some wing kind of, not sure, but Bentley and Aston Martin have similar logos, and they have Aston Martin written on their logo, and Bentley also has B written on their logo. The right answer is Longines. Okay, so you can check out these logos. तो जो गलत ऑप्शन है उनके लोगो भी देख लेना, राइट? सो दैट विल हेल्प यू दिस वे. मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ लोगो करा रहे हैं वही देख के जाओ. The others also give you an idea. Okay, all right. Last year PSU में question आता, I think Gale, I think all four were PSUs in that question, right? And we had done Gale, so people were able to Gale या Sale का किसी का logo किया था, and the same logo had appeared. That is why people were able to match it correctly, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें सही बैठ रहा था. And lot of people, those who watched the video, gained 1 mark. तो 1 mark भी बहुत valuable होता है. ठीक है, कई बच्चे जीके बिल्कुल ही नहीं करके जाते, 1 mark से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाती है. सो आइडेंटिफाई दिस कंपनी. नन ऑफ यू? नो आंसर्स? गेस तो कर ही सकते हो. ईशा. ओके, सो ईशा इज द फर्स्ट वन टू आंसर, एंड यस, योर आंसर इज करेक्ट. इट इज इरेडा. ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट और अथॉरिटी होता है क्या, एजेंसी होता है. इरेडा इज द राइट आंसर. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Let's see how many of you are able to get this. This is somewhat A, so I've given all the options from A. Echo, F1's infrastructure. Okay,
Yes, Isha seems to be a bright student. Yes, the right answer is Attenborough. Okay, Attenborough is the right answer. Yes, Ayushi, that you are right. You corrected your answer. Yes, that is Attenborough. Okay, let's see the next one. अब ऐसे सी वाले बहुत logos होते हैं, right? Like Chanel also had similar ones. Chanel has this kind of a logo. Okay, what is this logo? This is not Chanel. Chanel has this kind of a logo. Okay, so I actually help you eliminate one of the options. Okay, I'll give you a hint also. I mean, Chanel is not the answer. Hint, it's a jewelry brand. Okay, and luxury jewelry brand. Yes, all of you are right. The right answer is Cartier. Okay, so if you go to like Indian jewelers typically send copies of this, right? So sometime back, I took my wife to get her some jewelry. Okay, and like they were showing ki this ये Cartier की copy है, ये Cartier की copy है. Okay, so that's a premium brand, and the jewelers in India, they will say that okay, this is the design by Cartier, so they copy it. Okay. Okay, airlines company. I remember in MICAT 22, right? If I'm not wrong, 22 में जो logos match कराने को आए थे वो airline companies के आए थे. Okay, so tell me which airline company is this? So it is your task, ठीक है? Not to just see these logos, but जो बाकी जो options हैं, सारे logos देख लेना. हो सकता है कोई ना कोई logo match कर जाए. Okay, even if it does not match, maybe MICAT to somewhere or the other, it will help you. Which airlines it is? Has anyone been in these airlines? One thing which I've noticed is they typically ask premium brands. Okay, not always, but जो थोड़ा मैंने trend देखा MyCat में, they ask about certain premium brands. Okay, yes, the right answer is Turkish Airlines. Okay, nice. So all of you got it right. Most of you got this one correct. Okay, now identify this company. ये तो आपको पता होना चाहिए. Okay, since if you are a serious MICAT aspirant, then you must know this. Okay, मीडिया मैट्रिक्स डबल एम दिख रहा है तो मीडिया मैट्रिक्स. ये तो गैस लग रहा है. अगर आप मीडिया मैट्रिक्स कर रहे हो डबल एम देख के, दैट्स अ गैस वर्क. किसी को genuinely पता है? Like it's a trap option. I thought of some company and tried to figure out some company. I like making quizzes. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत obvious से आंसर हो जाए. ठीक है, तो I like that thing कि थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी होना चाहिए कि लोग कंफ्यूज हो जाएं. Yes, the ones who are answering McCann, that is correct. ठीक है, एज अ माइका एस्पिरेंट, ठीक है, आपको मैकेन के बारे में पता होना चाहिए. एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ठीक है, वन ऑफ द टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, तो उसका लोगो पता होना चाहिए. राइट, मैकेन इज द राइट आंसर. ओके, nice. Let's move to the next question. It's good to see that a lot of you are answering these questions correctly. Okay, identify this logo now. And if you're enjoying this session, please do like this video and appreciate our efforts. Probably this is the only channel where you get something related to MyCat. Anyone interested in chocolates? Okay, there seem to be some good people who are genuinely preparing for the examination. ठीक है, जो definitely थोड़ी background study करके आए हैं. ठीक है.
Okay, Lady Godiva. Yes, the book 887. You have given the context as well. Yes, that is Godiva. Okay, chocolate brand. Okay. All right. Let's see the next one. Stationery brand. I wanted to say Coach. Coach का थोड़ा different logo होता है. But yes, there are some brands that have similar logos. So that is why I have kept the options also interesting. ये आपको लग रहा होगा कि ऐसे बहुत easily identify नहीं हो पा रहा है. ठीक है हर question में. Identify this brand. So your task is not only to look at these logos, but जो options में बाकी हैं उनके भी logos एक बार देख लेना how they are different from uh, like the ones given here. क्योंकि एग्जाम में ऐसे लोगो नहीं आएगा. एग्जाम में जो मैंने सैंपल दिखाया था वैसा आता है 4 logos and 4 names. So you have to match the following. तो ये typically match the following ही आता है. और उसके अलावा ये भी आता है. You have this tagline based questions also. Okay. Yes, Montblanc is the right answer to this question. All right. ओके फाइंड दिस लग्जरी ऑटोमोटिव ब्रांड. ठीक है कार्स वगैरह तो काफी लोग करके जाते हैं. तो आई एक्सपेक्ट यू टू नो दिस आंसर. विच ब्रांड इज दिस? यस. ओके राशि चौधरी इज करेक्ट. F1 टीम भी है. F1 टीम्स इन्हीं पे बेस्ड होती है राइट. दीज ऑटोमोबाइल कंपनीज. यस. तो जो लोग F1 वगैरह देखते होंगे उनको पता ही होगा. द राइट आंसर इज मैक्लेरन. ठीक है पर हर किसी को नहीं पता होता. ठीक है जो जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है डेफिनेटली उसको पता होगा. यस मैक्लेरन इज द राइट आंसर एंड मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट. ओके. Alright, so I hope you are enjoying this session. So please don't forget to like this video and comment your score. बताना कि I think we had 10 questions. How many of you were, how many of the logos were you able to spot correctly? Okay. All right. So let's move on. Right. So like we have mocks for MICAT, so you can check out our free mock to understand like जिसने नहीं देखा है MICAT का last year का किस तरह का format होता था. You can check this out and join our community for these descriptive tasks. Okay. All right. So let us now have a quiz on current affairs. Right. Okay. Yes, we will share it on our community, right, on our Telegram as well as WhatsApp community. We shall share this with the annotations. ठीक है तो आपको ज्यादा रिसर्च ना करना पड़े कि किसका आंसर क्या था. What is the name of India's first fully indigenous 32-bit microprocessor? ठीक है. अब बताता हूँ कि इस जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स किस किस चीज से पूछते हैं टिपिकली. एक तो बिजनेस रिलेटेड चीजें पूछते हैं. ठीक है. सम इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड मे बी सम ओबिचुरीज एटसेट्रा. ओके सो आई हैव कंपाइल्ड सम क्वेश्चंस. अगर होपफुली 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे हों कि जो एग्जाम में आ जाए दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके. So name of first India's first fully indigenous 32-bit microprocessor. Param, like you need to know the name. 3201 is for 32-bit. Param Gagan Bhaskar Vikram. Not many responses. Okay, the right answer is Vikram 3201. Okay, yes, some of you got this one right. Vikram 3201. Okay, next question. Who became Japan's first female prime minister? Yeah, let's see if it, even if changes it won't be a very drastic change. Okay. So as I said that sometimes paper patterns change, right? So we'll adopt it.
We'll inculcate the changes in the MICAT 2 mocks. Okay, Japan's prime minister. Okay, good thing to know because not only for this exam but subsequently in ZAT and others. Many of you would be appearing in ZAT also, right? Yes, Sanai Takaichi is the right answer. Okay, next question. Which tax rates were abolished under the recently announced GST 2.0? Now, don't be surprised if you see 8 options in MyCat, right? So, like those who have appeared on MyCat in the past must be knowing this. जिसने पहले MyCat नहीं दिया होगा उसे नहीं पता होगा, but जिनने MyCat दिया उन्हें पता है कि 8 options भी आते हैं और हर सेक्शन में आते हैं. Like it's not कि just इंग्लिश में आ जाते हैं, क्वांट में भी 8 options आते हैं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग में भी आते हैं, जीके में भी 8 options आ जाते हैं. ठीक है, so you can expect that. Okay, that is no, that has the number of options is uneven. किसी में 4 option होते हैं, किसी में 8 option होते हैं, 5 option भी होते हैं. Like odd one out में 5 option भी देते हैं. Okay, so they have this mixed thing. Okay, which two tax rates were abolished? तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया. Now, as per the new GST regimes, right? So you have 5%, 18%, and 40%. तो luxury वाले में जो 40% कर रखा है, and 5 and 18 are remaining ones, right? So 12% and 28% have been abolished. The question is asking abolished. That means they have been removed. So 12 and 28 is the right answer. Okay, they have been removed. Now, as we have three slabs right now. Like earlier, there used to be four. Okay, so four slabs होते थे 5, 12, 18 and 28. Now they have been abolished, and now new 40% has been has been introduced in luxury goods. Okay, abolished. Yes, announced तो क्या पहले से तो थे ही, चार slabs पहले से थे. The question is asking abolished. So 12 and 28% is the right answer. MyCat 1 नहीं दिया था, MyCat 1 हुआ ही नहीं अभी. दोगे कैसे? यू मीन टू से आपने भरा नहीं था, राइट? दिया नहीं तो अभी तो दिया तो किसी ने भी नहीं है. So MyCat 2 you may fill. ठीक है, सी अदर एग्जाम्स ऑल्सो लाइक MyCat का भी 2 का उनने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया. अभी देखो स्नैप वगैरह भी देके देख लो. अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली, अगर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ब्रांडिंग में, देन डेफिनेटली यू शुड फिल. 92 परसेंटाइल के अराउंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो दैट्स अ गुड स्कोर. ठीक है, आपके गुड चांसेस यू हैव इन दिस टेस्ट. तो इंग्लिश वही रहती है, कैट वाली टाइप की आती है. क्वांट थोड़ा चैलेंजिंग आती है. कल पता चलेगा कि कुछ कोई चेंजेस होता है नॉट. यस, माइकैट 2 इज रिटन बाय मोर नंबर ऑफ पीपल बिकॉज पहले तो पता भी नहीं रहता, अवेयरनेस कम रहती है. सेकंड थिंग इज कैट खराब जाता है तो लोग मतलब जो 98 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उनकी 90s में आ जाती है, सो दे थिंक कि एक और एग्जाम है हमारे पास, वो दे देता है. यस, नेवर अलोन इज द राइट आंसर. ओके, let's see the next question. India recently surpassed which country to become the third largest automobile market globally? और थर्ड लार्जेस्ट के साथ साथ मुझे टॉप 2 भी बता दो कौन कौन से हैं. टॉप 2 विल बी इजी टू गेस. India became the third largest. And this should be an easy thing to guess. Yes, Japan is the right answer. Right, so Japan was four. Now Japan has moved to the fourth one. Okay, so top 2 are China and US. Okay, okay, so you remember that you were stuck for 2 hours. Yes, hopefully it should not happen this time. Okay, uh,
लास्ट ईयर इट वाज एन अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैपेंड ऑन माइकैट वन, क्योंकि जिसको पेपर अपलोड कर रहा था वो पेपर ही अपलोड नहीं कर पा रहा, ऐसे कुछ इश्यू हुआ था राइट इन अवर सेंटर, दैट्स व्हाट दे टोल्ड अस दैट कि वो पेपर अपलोड करना भूल गया या कुछ कुछ ग्लिच हो गया था, यस आई रिमेम्बर दैट, 2 घंटे उसमें वेट करने पड़े थे। ओके Okay, so this is like international news. Due to ongoing protests that disrupted rail connectivity, hundreds of tourists were recently stranded near which iconic site? So, उसमें there was some related to uh, like these are among the seven wonders of the world. So there was like this bus contract thing, ठीक है, जिसकी वजह से strike चल रही थी, and रीड अबाउट दैट नेम ऑल्सो, आई फॉरगॉट द नेम, ठीक है, उसका नाम पढ़ लेना कौन सी बस सर्विस थी, उसकी वजह से स्ट्राइक चल रही थी एंड एज अ रिजल्ट हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट वर स्ट्रैंडेड ऑन दैट प्लेस। तो बहुत बड़ी बात है, इट्स वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। नॉट आउट ऑफ दिस न्यूज। ओके, इट इज इन माचू पिच्चू। Okay, where is it located? Yes, Peru. Yes, your answer is correct. It is in Peru. So there was some bus service जैसे होता है ना कि like you have contract, right, and that there was some issue with that contract, and as a result there were protests, and since it's a world famous site, right, so a lot of people went there and due to protest they got stranded. Okay, and it has been like it has happened multiple times, अभी नवंबर में भी हुआ था, उससे पहले 2-3 महीने पहले सितंबर में भी हुआ था। Which country recently suspended groundnut imports from India due to uh, aflatoxin concern? Okay, so groundnut में कुछ I guess it's a kind of some which mold or something is there. I was reading about it. So which country suspended groundnut imports from India? Heard of this news? So it is Indonesia. Okay, so it affected the trade because they used to like India exports a good quantity of groundnuts, and due to this reason, they suspended the imports from India. Who is the recent recipient of the Dada Saheb Phalke Award for the year 2023? ठीक है, 2023 मतलब वो year है 2023, but it was awarded in 2025. Dada Saheb Phalke Award. Yeah, that thing is a mold, and due to that concern, uh, the imports were banned. दादा साहब फाल्के। ओके, ये तो काफी लोगों ने सुना होगा, अवार्ड्स एंड ऑल स्पेशली लोग पढ़ते ही हैं। इज द राइट आंसर इज मोहनलाल। ठीक है, मोहनलाल इज आई थिंक मलयालम एक्टर है जो दृश्यम में था, और अभी रिसेंटली भी उसकी एक मूवी देखी थी मैंने, थुडारम। ओके, ग्रेट एक्टर। India's first overseas defense manufacturing facility was inaugurated in which African country? Does anyone know this answer? First overseas defense manufacturing facility. No, not Chad, it is in Morocco.
एंड इसका वो भी पढ़ लेना, टाटा एडवांस्ड, TASL होता है। ऐसे क्या होता या बाय टाटा। ऐसे क्या होता है, सिस्टम लिमिटेड होता है कुछ लाइक, TSL है, आई थिंक सिस्टम लिमिटेड होता है TSL। ठीक है, सर्च कर लेना TSL क्या होता है। ठीक है, यस बाय टाटा, यस यू आर राइट। तो ये पूछ सकते हैं, दे माइट ऑल्सो आस्क कि कौन से कंपनी का है, राइट। सो TSL से पूछा जा सकता है। ओके, सो निष्ठा जैन seems to have read about this news. Great. All right, so let's see the next one. What is the name of the world's highest motorable road constructed by the Border Road Organization in Ladakh at 19,400 feet? Systems Limited, yeah. Okay. Tata Advanced System Limited. Okay, TSL. It's in Morocco. World's highest motorable road. Recently, न्यूज में थी। कोई अगर ट्रैकिंग वैकिंग में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, लद्दाख वद्दाख गया हो, रिसेंटली को गया लद्दाख तो में से घूमने। खारदुंगला, नो दैट इज नॉट द आंसर। यस, राइट आंसर इज मिगला पास। ठीक है, रिसेंटली हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, so that is मिगला पास। Okay, so I hope you are enjoying the session, so please don't forget to like this video. Let's see the next question. Which country officially became the 11th member of the ASEAN in 2025? Recently हुआ, अभी सितंबर में आई गेस हुआ है। नहीं, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, एशियन का नाम सुना होगा आपने। एंड इट इज हेडक्वार्टर्स इन वेयर? तुझे पता है एशिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर है, कभी कभी किसी किसी में पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज के साथ साथ बता रहा हूँ कि रीड अबाउट, आई थिंक इन वन ऑफ आवर मॉक्स आल्सो वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? यस, गुड, गुड टू सी कि आप लोग जनरल अवेयरनेस में अच्छे हो, राइट। ईस्ट टिमोर और टिमोर लेस्टे। Okay, so these are the 11 nations, right? It is headquartered in Indonesia, Jakarta, and these are the 11 nations. Timor-Leste is the latest inclusion. So अभी ये I think September या October की news है, तो past 3 months की current affairs should suffice for this exam. ठीक है? Okay, next question. On 1st October, the cabinet approved country-wide celebration for the 150th anniversary of which of these songs? अभी थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ये थोड़ा गेस करके भी आप आंसर कर सकते हो। देखो इसमें से आप देखो, ए मेरे वतन के लोगों तो एलिमिनेट कर सकते हैं हर कोई, ठीक है, बिकॉज लता मंगेशकर sang it एंड आजादी के बाद गाया था। ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, जो जनगण मन है दैट वाज रिटन इन 1911। ठीक है, तो उसी के अराउंड 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज, तो उसी के अराउंड लिखा था। ठीक है, सो दो बजते हैं, सारे जहां से अच्छा भी बात का है, वंदे मातरम इज द राइट आंसर। ओके, सो 150 ईयर्स, तो हो सकता है सिग्निफिकेंट चीजें किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, ऑलराइट, सो ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन करेक्ट, ग्रेट टू नो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian city has been recommended to host the Commonwealth Games 2030? 2030 Commonwealth Games.
Okay, easy one. Yes, right answer is Ahmedabad. Okay, do you know 2026 कहाँ होंगे? अगर मान लो 26 पूछ लिए, 22 हुए थे बर्मिंगम में, ठीक है, 26 are going to be held in Glasgow and 2030 Ahmedabad. And then I'm sure that you know what Commonwealth Games are, which countries participate in Commonwealth. माइका पक्का पूछेगा, पूछ सकता है, पूछ ले तो अच्छी बात है, एक मार्क्स तो आपका बन ही जाएगा जीके में. Great. Okay, let's see the next question. The World Food Prize Foundation recognized which Indian chef as a top agri-food pioneer? Okay, so awards and honors से related चीजें पूछते हैं. I feel that this is a relevant question from MICAT point of view. ओके, विकास खन्ना, रणवीर ब्रार, संजीव कपूर, गरिमा अरोड़ा. ओके, लगता है ये न्यूज आप में से बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी. और यस, आई एम गेटिंग राइट आंसर्स फॉर दिस. यस, संजीव कपूर इज द राइट आंसर. ठीक है, जिसको नहीं पता था, नाउ यू नो वन मोर फैक्ट. फ्लिपकार्ट पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च द फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड? ओके, वेरी ऑब्वियस यार, वेरी ऑब्वियस तो नहीं है. लॉट ऑफ देम गेव इनकरेक्ट आंसर्स आल्सो. फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड. So it is an NCMC card, National Common Mobility Card, was launched by Flipkart in partnership with, it is with Pine Labs. Okay, the right answer is Pine Labs. Okay, let's see the next one. Which Indian company acquired 100% stake in Sterling Bank of Bahamas? So who acquired 100% stake in Sterling Bank? Mergers and acquisitions पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, एक लाइक जो भी इंडियन के कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं उनके पढ़ लेना कि किस किस की क्या एक्वायर्ड कंपनीज है. आई रिमेम्बर लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट के एक्विजिशंस पूछे थे. दे हैड आस्क्ड कि इनमें से कौन सी कंपनी फ्लिपकार्ट ने एक्वायर नहीं की है. फाइन लैब्स का हाँ आईपीओ हुआ था. मतलब अभी चल रहा है बेसिकली. यस, इट इज बाय आईआईएचएल. ठीक है, हिंदुजा ग्रुप का है. इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड. Okay, IHL IndusInd International Holdings Limited. So they acquired 100% stake in this Sterling Bank, Bahamas. India's rank in the Global Innovation Index has improved from 81 to what position? So last year it was 81. Okay, and it has improved to which position now? Yes, 38 is the right answer.
Amazon Pay launches its new campaign, Payments Ka A to Z, featuring which Bollywood star? Okay, so Amazon Pay recently launched this campaign, Payments Ka A to Z. ठीक है, ऑब्वियसली ये नहीं पूछता कि किस कंपनी का है, बिकॉज ए टू जेड से आप अमेजोन ही समझोगे, राइट? अमेजोन इज ए टू जेड ओनली. So who is the brand ambassador for this? किसने देखा है कैंपेन? कोई शॉपिंग करता है इतनी फ्रीक्वेंटली या फिर ये सब देखता है? लाइक एज अ माइका एस्पिरेंट आई बिलीव दैट you should watch all these things. Okay, nice to see that all of you are getting it right. Yes, the right answer is Ayushman Khurrana. Okay, all right, let's see the next one. Rishi Sunak recently joined which company as a senior advisor? गोल्डमैन सैच का भी बना था, ठीक है, सो नो दैट एज वेल. तो इसके अलावा लाइक गोल्डमैन सैच ही बिकेम गोल्डमैन सैक्स, और एंथ्रोपिक एक एआई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, इनका भी बना है, राइट? प्लस प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, एंड एडिशन टू दैट माइक्रोसॉफ्ट. ओके, सो दैट इज द राइट आंसर. सो ये सुना ही होगा, लाइक काफी फेमस न्यूज होती है, एंड पीपल विल क्रैकिंग जोक्स आल्सो, राइट? यू नीड टू बी like the prime minister of UK to get these posts and all. Who achieved the record for the highest ever rating points in ICC men's T20 international batting rankings? तो आई एज्यूम कि क्रिकेट काफी लोग देखते होंगे आप में से, पर एग्जाम्स में मैंने नोटिस किया कि बहुत बकवास से ऑप्शन भी देते हैं, क्योंकि जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको लग जाता है कि हाँ ये इजीली हो जाएगा, बट एग्जाम्स में टिपिकली ऑप्शंस. ओके, सो विराट कोहली को इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो. द वंस हु वॉच क्रिकेट, जो नहीं देखते वो सोचेंगे विराट कोहली भी हो सकता है, ठीक है. जो देखते हैं उन्हें पता है कि क्या कहते हैं, विराट कोहली ने काफी पहले रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है. शुभमन गिल T20 में कुछ खास करते नहीं है. ओके, बचते हैं दो ऑप्शन. सूर्य कुमार यादव भी रिसेंटली ऐसे कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है. अगर ये रीसेंट रीसेंट इवेंट है, सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी अभिषेक शर्मा. ओके, अगर एशिया कप आपने देखा होगा एंड ऑल, लाइक इट इज इजी टू गेस फॉर क्रिकेट वॉचर्स. जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो तो बहुत इजीली बता देंगे, अदरवाइज ऑल्सो यू मस्ट नो. सो ही क्रिएटेड आई थिंक 931 पॉइंट्स हैं इसके, दैट इज द हाईएस्ट एवर. ओके, हु वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025? ओके, नोबेल प्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर आप कोई भी एमबी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जिसमें जीके आती है, नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द फेवरेट्स. तो बी इट जैट, बी इट सीमैट, कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए लाइक काफी सही है. मुझे किस बात पे अटैक करेंगे? Yes, sir, I didn't say anything wrong, right? Okay, Nobel Prize is becomes important, right? The right answer is Laszlo. What? However you pronounce this name? I think he's from Hungary. एक बार चेक कर लेना किस कंट्री का है. What I believe कि हंगरी का था, if I'm not wrong. ठीक है, लैज़लो याद रख लेना. Now I'm giving you the list, ठीक है. तो फिजिक्स कुछ निमोनिक से याद कर लेना. कई बार ऐसे मैच द फॉलोइंग किसी ना किसी एग्जाम में नोबेल प्राइज पक्का पूछेंगे, राइट? सो इफ यू आर टारगेटिंग जैट, सी मैट, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं. इवन इन या हैन कैंग वाज लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर के थे. कुछ ऐसे याद कर लो. फिजिक्स में कुछ क्लार्क आ गया, ठीक है, एंड केमिस्ट्री को रॉब कर लिया, राइट? आई मीन क्योंकि वो पूरी लिस्ट देता है, सो यू कैन यूज सम निमोनिक्स. एंड मेडिसिन में let's say Mary Fred, you can remember this way. Okay, and then you have for literature, so this is Laszlo.
and Nobel Peace Prize is Maria Corina, uh, and then you have these economics. ठीक है, so याद कर लें नोबेल प्राइज विनर्स, हो सकता है इससे मैच द फॉलोइंग भी आ जाए. ठीक है, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है. दे माइट गिव यू कि ये कैटेगरी है, दीज आर द लिस्ट ऑफ विनर्स, यू माइट बी आस्क्ड फॉर दैट. Okay, all right, let's see the next question. So please do like this video, and I hope you are enjoying the session. Who passed away recently and was known as the kitchen mogul of India? Kitchen mogul of India. एंड ऑफ कोर्स पीयूष पांडे के बारे में पढ़ लेना. ठीक है, पीयूष पांडे के एड्स, ये इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट पीयूष पांडे. ठीक है, पीयूष पांडे बिकॉज एडवर्टाइजिंग फील्ड से था, तो उसके मेजर एड्स पढ़ लेना. ठीक है, हो सकता है उसमें ऐसा आ जाए माई कैट में 8 ऑप्शंस के साथ, इनमें से कौन सा एड पीयूष पांडे से एसोसिएटेड नहीं है. ठीक है, सो डू रीड अबाउट थिंग्स. सो the purpose is not just these questions. ठीक है, I do a lot of research in creating the questions, understand the examinations thoroughly. तो अगर आप serious aspirant हो, so you must understand कि किस चीज से related क्या एग्जाम टेस्ट कर सकता है. ओके, सो पीयूष पांडे से रिलेटेड उसके एड्स की लिस्ट देख लेना, और उसके जो हिस्ट्री पढ़ लेना कि कौन से कॉलेज से पढ़ा था. ठीक है, एंड ऑल दोज थिंग्स. आई थिंक इन वन ऑफ आवर मॉक्स ऑल्सो आई पुट अ क्वेश्चन ऑन पीयूष पांडे दिस टाइम. जो करंट अफेयर्स रखे थे. Yes, so TT Jagannathan. Okay, which organization was he associated with? So obituaries are again important. So he was associated with this TTK Prestige. जो आप इसके कुकर्स और ये सब देखते हो ना, दैट इज वाई किचन मोगल ऑफ इंडिया. ये जो प्रेस्टीज आपने देखा कुकर्स एंड मतलब जो उसके यूटेंसिल्स आते हैं, ही वाज द ओनर ऑफ दिस. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई पावर्ड ब्राउजर लॉन्च्ड बाय ओपन एआई? तो ओपन एआई ने ब्राउजर लॉन्च किया रिसेंटली. डज एनीवन यूज दैट ब्राउजर? आई डोंट नो, विंडोज में आया कुछ समय पहले तो सिर्फ लाइक एप्पल डिवाइसेस में चल रहा था. मे बी नाउ दे माइट हैव लॉन्च्ड, क्योंकि मैंने कुछ समय से देखा भी नहीं, बट इनिशियली जब आया था दैट वाज ओनली फॉर एप्पल. आई डोंट नो इफ दे हैव ब्रॉट इट फॉर विंडोज एज वेल. ओपन एआई का ब्राउजर ऑर्बिट एटलस स्फीयर कॉमेट. Yes, Atlas is the right answer. Okay. Comet is by Perplexity. ठीक है, so science and tech से related questions पूछे जाते हैं. Demo link, which demo link are you talking about? Which company became the world's first to reach a market capitalization of 5 trillion in October 2025? $5 trillion market cap. Yes, NVIDIA is the right answer. Okay. All right, let's see the next question. Which Indian telecom company has partnered with Google to offer the Gemini AI Pro plan to its users for free for 18 months? Yeah, some of you must have already been using this. I do not have any idea about the demo link that you're talking about, from whom you received the demo link. Yes, the right answer is Reliance Jio. जो लोग एयरटेल कह रहे हैं, एयरटेल परप्लेक्सिटी के साथ टाई अप था. ठीक है, परप्लेक्सिटी
कई लोग यूज भी कर रहे होंगे, ने परप्लेक्सिटी के साथ टाई किया, जियो इज पार्टनर्ड विद जेमिनाई, यस एयरटेल इज परप्लेक्सिटी, करेक्ट। तो एआई से रिलेटेड क्योंकि काफी चीजें न्यूज में रहती हैं, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। Which country became the first to achieve triple elimination of HIV, syphilis, and hepatitis B transmission from mother to child? Triple elimination. Since these diseases are transferred from transfer genetically from mother to child, so a country has achieved this elimination of these three diseases, which is this: Maldives, Sri Lanka, Cuba, Thailand. Okay, the right answer is Maldives. Okay, all right, let's see the next one. Who recently received a knighthood for services to cricket? Is again a question from cricket, but sports related they do ask. तो अगर मतलब बाकी स्पोर्ट के भी देख लेना, कुछ कुछ कौन कौन सी चैंपियनशिप हुई एंड ऑल, दे विल आस्क questions related to sports. So I remember last to last year they had asked last to last year था 23 या 22 में they asked about हरलीन देओल। ठीक है, तो आज के डेट में तो फिर भी लोग ज्यादा जानते होंगे, तब लोग कम जानते थे। ये शीज मतलब वो मैच द फॉलोइंग आया था, हरलीन देओल थी और एक बॉक्स निखात जरीन थी, दे हैड आस्क्ड टू मैच द इंडियन प्लेयर्स, विमेन प्लेयर्स विद देयर स्पोर्ट्स। ओके, द राइट आंसर इज जेम्स एंडरसन, करेक्ट। Next question. What is the name of the new open source online encyclopedia launched by Elon Musk's XAI? Open source online encyclopedia. Anyone uses this encyclopedia? इजी है, मतलब ऑप्शंस तो इसमें कुछ भी बना रखे रैंडम। ओके, ग्रॉकपीडिया इज द राइट आंसर, ग्रॉकीपीडिया। ओके, ग्रॉक एआई like Elon Musk, so you might have easily guessed the answer. Okay, Karthik Narayan is the chief product and business officer of, so recently appointed। ठीक है, तो इंडियंस एट ग्लोबल स्टेज, तो कोई ग्लोबल कंपनी में कोई अपॉइंट होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। कार्तिक नारायण recently appointed chief product and business officer to all cloud companies. Anyone aware of this? Not heard. So there will be certain things which will appear uncommon, and there are some common things. This is one of those uncommon stuff. The right answer is Google Cloud. Okay, next question. Player of the tournament in the recently conducted ICC Women's World Cup. आई बिलीव कि थोड़ा सा स्क्यूड हो गया सब, क्रिकेट क्रिकेट की बहुत सारी न्यूज आ गई है। ओके, 8 ऑप्शंस, ठीक है। लॉरा वुलवार्ड नहीं, विमेन्स वर्ल्ड कप नहीं देखा आपने। ओके, सम ऑफ यू माइट से दीप्ति, दिस स्मृति मंदाना आल्सो, ठीक है, जिसको सिर्फ एक नाम पता होगा। नो, द राइट आंसर इज दीप्ति शर्मा। यस, मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस वन राइट, लाइक बॉलिंग बैटिंग दोनों में ऑल राउंड परफॉर्मेंस। ओके, सो I think she took 22 wickets and runs be she had 400 plus runs, right? Yeah, so Jemima and Smriti signed with Red Bull. है तो स्पॉन्सर्स वगैरह देख लेना, कभी कभी स्पॉन्सर्स पूछ लेते हैं।
ये कौन sponsors थे इसके? You might ask. Okay, here's the next question. The centenary celebration of Indian hockey took place at. ठीक है, तो वैसे 100th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया, लाइक 1925 से हॉकी खेलना स्टार्ट किया था। सो उसका सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट हो रहा है रिसेंटली इन नवंबर, आई थिंक 7th नवंबर और समथिंग। ये तो उसका एक सेलिब्रेशन हुआ था, नवंबर में हुआ था। ये कौन से स्टेडियम में हुआ था? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद और डीवाई पटेल पाटिल स्टेडियम मुंबई। अरे थोड़ा इजी बन जाता है राइट, ध्यानचंद नाम सुन के आपको आ जाता है। ठीक है यार, दैट इज द रीजन, लाइक ध्यानचंद। ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, लॉजिक, जीके में लॉजिक नहीं लगाना चाहिए वैसे, पर कभी कभी सही भी होता है। कई लोग यहाँ पे लॉजिक लगा देंगे, ये ध्यानचंद नाम है तो डेफिनेटली ध्यानचंद स्टेडियम, बट यस इट इज इन ध्यानचंद स्टेडियम itself. Okay, so prominent, yeah, hockey player for that reason at this venue. Okay. Who has been appointed as the first woman to lead the United Nations tourism in its 50-year history? I'll create a video on that. Snap last minute tips. Okay, no answers for this question. Probably something that you might not have heard of. Sheikha Nasser Al Nuwais, UAE की lady है, the first lady for it. No clue. That's fine. Right? There will be certain questions in the examination also. You'll have no clue about that. Which company is building a 55-story tower in Dubai named after Shah Rukh Khan? ये तो सुना होगा, मतलब ये तो टावर का नाम तो सुना होगा, कंपनी का नाम पता हो वो दैट इज इम्पोर्टेंट। शाहरुख जेड लगा के, दिस इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग। इसका लाइक बिल्डर कौन है दुबई में? दिस इज अ गुड क्वेश्चन राइट, कंसिडरिंग लाइक माइकैट जैसे एग्जाम को ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टावर? मतलब न्यूज़ सुनी है किसी ने? रिसेंटली लास्ट मंथ की न्यूज़ है, न्यूज़ तो शायद सुनी होगी, कंपनी का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज दानोबे प्रॉपर्टीज। Oh, it does not mean that if something is popular that is the right answer. ठीक है, तो ये पॉपुलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट गलत होता है। इट अप्लाइज टू एनीथिंग, लाइक इफ समथिंग इज पॉपुलर नॉट नेसेसरी दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट? सो हो सकता है कि एमबीए प्रिपरेशन में बहुत सारे चैनल पॉपुलर हो, तो बेस्ट यू नो विच वन इज राइट। ओके, हाउ लॉन्ग डिड द लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन इन यूएस हिस्ट्री लास्ट? Okay, so this is also important. Longest government shutdown हुआ था यूएस में, और they had massive losses due to this. So congratulations, Devansh, on your score. I hope you do well on the upcoming exams also. Longest government shutdown in US history. कितने days तक चला था? अभी रिसेंटली हुआ था, it was for 43 days. उससे पहले 35 days का रिकॉर्ड था। Now it is 43 days. Which brand topped the Kantar brands top 100 most valuable Indian brand 2025 list? सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो लाइक आइडियली ये आंसर आपको आना चाहिए कि ऐसी न्यूज़ेस, दिस काइंड ऑफ न्यूज़ यू मस्ट रीड।
जोमेटो जोमेटो कर रहे हैं, नो जोमेटो इज नॉट राइट, आई थिंक HDFC बैंक द राइट आंसर। जोमेटो कैसे आंसर कर रहे हो? इज इट जोमेटो? लाइक आई डिड रीड HDFC बैंक है। ओके, all right, so with this we come to end of this quiz. I hope you like the quiz, so please do like this video and share it with your friends. Okay, कई लोग पूछते हैं माईकैट का, जहाँ पे भी आपको लिखे कि लोग पूछ रहे हैं माईकैट का मटेरियल, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिकॉज यू वॉन्ट फाइंड material related to MyCat. In fact, we have content for all exams, right? So we did a 30-day series for CAT also, but लोग हमें सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ छोटे एग्जाम्स के लिए जानते हैं, बिकॉज वहाँ पे रेयर कंटेंट मिलता है, बट वी डू हैव कंटेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, सो इफ यू recommend us, that would be great, right? And our content is very well researched for all exams. Okay, which has less content available? Yes, video but directly, yes, MyCat में एक logo वाला आया था, and some other things also I think we had discussed. सिस्को एक बार पूछा था नेक्स्ट वाले MyCat 1 के क्विज में, सिस्को पूछा था, MyCat 2 में पूछा गया था सिस्को के बारे में। लास्ट मिनट टिप्स, आई वुड से कि एक वीडियो बनाया था उसमें, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि अराउंड 20 25 25 25 25 बाकी 3 सेक्शन को देना, जीए को 5 मिनट्स देना मैक्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में अटेम्प्ट ऑल। एक वीडियो बनाया है, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, उसमें पूरा डिटेल में बताया कि किस सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। डिस्क्रिप्टिव में एक तो पॉइंट्स में लिखना, ये जो 3 पॉइंट्स फॉर और अगेंस्ट बोलते हैं 1 2 3, और ट्राई टू कीप इट 100 to 150 वर्ड्स, क्योंकि वो 300 वर्ड्स देंगे, पॉसिबल नहीं है कि आप 300 वर्ड्स इनटू 4 टाइप कर पाओ। सो कीप इट अराउंड 100 to 150 वर्ड्स। एंड स्टोरी में जो लिखा होगा उसमें लिखा होगा मेंशन द ऑर्डर ऑफ इमेजेस, सो यू नीड टू मेंशन दैट ऑर्डर। ओके, प्लीज डू नॉट थिंक लाइक कि स्किप कर दो सेक्शन, कोई कट ऑफ की पता नहीं रहता कि कितनी कट ऑफ जाती है, बट देर आर लाइक पीपल से कि नेगेटिव मार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो नॉट अटेम्प्टिंग ऑल इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। ट्राई टू अटेम्प्ट, एक दो क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं अगर आपने क्वांट पूरी कर रखी है। ओके, सेक्शनल कट ऑफ होती है, कितनी होती है कुछ नहीं पता, माई कैट के बारे में देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, राइट, इट्स ऑल अ ब्लैक बॉक्स। व्हाट वी नो इज लाइक जो कैट में अराउंड, कैट एंड जेड में अराउंड अर्ली 80s में आते हैं, वो लास्ट एडमिट्स होते हैं, बट दोज आर रेयर, लाइक मोस्टली पीपल विद 90 प्लस आर एडमिटेड, 85 से 90 में कुछ हो सकते हैं, देयर आर वेरी फ्यू हु आर इन द रेंज 80 to 85, उसमें भी बहुत रेयर जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, इंटरव्यूज बहुत अच्छा देंगे, या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत अच्छे होंगे। Story title, I don't think they ask, right? If they ask, they mention, I don't recall, but I don't think they ask the story title. ये सीक्वेंस रखना पड़ता है, ठीक है, सीक्वेंस आप चाहे स्टार्टिंग में रख सकते हो, बीच में रख सकते हो, लाइक बीच में भी लिख सकते हो ABCD, जो इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा प्लीज रीड दैट एंड पुट इट अकॉर्डिंगली। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट वीडियो अ कपल ऑफ डेज बैक, उसमें सारी मतलब बता रखा है कि कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, इस सेक्शन को कितना अटेम्प्ट करना है, क्या क्या टॉपिक्स आप पिक कर सकते हो। रिमेंबर, जो ये होता है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, तो उसमें मैक्सिमाइज कर लेना, उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज ये टिपिकली काफी इजी आते हैं। क्वांट में हो सके तो DI, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो DI कर लेना, ठीक है, क्योंकि उससे 3 4 क्वेश्चन का एक सेट आता है पूरा, और बाकी टॉपिक्स जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें से कुछ कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो। You can write in third person, no idea about that कि first person या third person होता है, you can write in any format. ओके, फोटो पेस्ट नहीं करनी है उसमें शायद, आई थिंक उसमें बस आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक फोटो रख लेना अपने साथ, if they ask for it, so it is always good to carry a photograph, pen, etc. If they are not available at the center, I mean they might ask, कभी कभी होता है कि पेन नहीं, एक ट्रांसपेरेंट पेन रख लेना with you. Okay, so I'll be doing the analysis. I'll be appearing on the examination tomorrow. So 11:15, 11:30 जब भी बाहर आएंगे, I'll do the analysis. And उसी के साथ साथ स्नैप भी मेरा सेम सेंटर पे है. So like I'll be discussing it. क्वेश्चन डिस्कशन प्रोबेबली संडे को करूंगा, क्योंकि कल स्नैप भी देना है, एंड स्नैप का क्वेश्चन डिस्कशन शाम को हो जाएगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन डिस्कशन हम संडे को कर लेंगे। तो बाकी अपनी कम्युनिटी में
हम डिस्कस कर लेंगे कि आंसर्स, ठीक है, आंसर्स थोड़े बहुत डिस्कस हो जाएंगे क्वांट के और जो भी आंसर्स थे, सो दैट वी गेट टू नो, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी एंड होप यू विल डू गुड एंड होपफुली इससे कुछ अगर आ जाए सो यू विल सेंड योर गुड विशेस टू मी। आप कहोगे कि ये वीडियो देख के गए थे और क्या कहते हैं इससे कुछ ना कुछ आ गया, लास्ट ईयर लोगो आ गया था, ठीक है, हो सकता है इससे कुछ एक जीके के क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं आउट ऑफ 10, दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है, 2-3 मार्क्स भी काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं to aspirants. Okay, so wish you all the best and do your best on the examination. And as I said that, like some students shared that with me that की pattern change हो सकता है, ठीक है, अगर टीटा क्वेश्चन आएंगे that's good, right? और पैटर्न जैसा भी चेंज होगा accordingly we will update our mocks for MICAT too. All right, so this was for this session. Thank you everyone for attending this. Right, so if you want the PDF, तो जो हमारी community है उसको join कर लो. Right, WhatsApp community का link description में दिया हुआ है. So you may join that, and I'll share this with you also here. आप join कर लेना और फिर उसके बाद वहाँ ये PDF भी मिल जाएगा, so that you can revise these लाइक क्वेश्चंस। तो हो सकता है इससे कुछ इशू हो जाए। और जो लोगोस बताए थे, ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन थे उसके अलावा जो लोगो है वो भी देख लेना। ओके, तो थैंक्स एवरीवन एंड गुड नाइट।